and welcome to learning session number 8 of chapter number 2 of science 2, which is life processes in living organisms part 1. This is going to be the last learning session of this chapter. Okay, so far in this chapter you have learned many things, right? So whenever I say the name of a particular topic, what are you going to do is you're going to try to recall तुम लोगों को क्या क्या याद आ रहा है उस टॉपिक के बारे में. Okay, so the first thing we studied was introduction to this chapter, and we revised some key topics related to this chapter that we have learned in our previous classes. So this was done in the first learning session. So what all did we discuss in the first learning session? We had discussed answers to 4 can you recall type of questions. So do you remember any of those questions? Do you remember answer to any of those questions? If you don't, go back to your notes and start going through all the questions and the answers. Okay, by now you all should have started by hearting this chapter, right? So just go to your previous notes and see what all questions we have discussed and see what are the key points in the answers. Next, we'll studied aerobic respiration. How many steps are there in the aerobic respiration? What is the meaning of cellular respiration? What do we get at the end of each step in aerobic respiration? Again, just check if you can answer all of these answers. Can you remember, can you recall all of the answers? If you cannot, go back to your notes and start going through all your notes. Okay, aerobic respiration में कितने steps है, क्या क्या steps है, उसके end में क्या क्या मिलता है? What is anaerobic respiration? How many steps are there in anaerobic respiration? What do we get at the end of each step in anaerobic respiration? What is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Then we got energy. Then we had studied energy. How do we get energy from different food components like proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, water, and fibers? So do you remember the definition of proteins? If not, go back to your notes and see what the definition of proteins we have written. What are carbohydrates? How much energy do we get from carbohydrates per gram? What are lipids? Where are they stored in our body? How many types of vitamins do we have? How many of them are soluble in water? How much part of our body is made up of water? Can fibers be digested? And what is their importance in digestion? All these things you all should remember when you all read this third point. Then we studied mitosis. How many steps are there in the mitosis? How did we remember? What is the sentence we made to remember the different steps? What is meiosis? How many steps are there in meiosis? What is the basic difference between mitosis and meiosis? When is mitosis used? When is meiosis used? And which cells will use mitosis? Which cells will use meiosis? All this should come to your mind when we read when we read the terms mitosis and meiosis. Okay, so just check if you can remember these things about all the various topics we have learned so far. Okay, and if you cannot remember, pause the video right now, go back to your notes and check whatever we're talking about and just refresh your memory. Okay, great. So now we're going to move ahead. Okay, so today in this learning session we're only going to see end of chapter questions. We have completed this chapter, we only see end of chapter questions. Okay, the words we're going to learn today are unicellular, restore, emaciated, yield. Okay, unicellular, restore, emaciated, and yield. Okay, so the first question we are discussing today is writing definitions. Okay, so what I wanted to do is, many of these terms we have seen in detail, right? So just pause the video and try to write the definitions. You all can write by yourself. अपने आप से अगर तुम लोग ने अभी just पिछले स्लाइड में अगर एक्चुअल में नोट्स गो थ्रू किए होंगे, तुम लोग को ऑलरेडी आधे डेफिनेशंस आ रहे होंगे. ओके, सो जो कुछ भी आ रहा है वो लिख लो नोटबुक में, एंड द वंस यू कैन नॉट रिमेंबर, go to the textbook. Also have a habit of reading the textbooks. Okay, so go to the textbook, mark those definitions, find the definitions. Nutrition का definition कहाँ पे है, cellular respiration का definition कहाँ पे है, mark it in the textbook and then copy it in your notebook. Okay, so again I'm going to wait for 5 seconds for you to pause and write down all the definitions before we actually move ahead.
Okay, I hope you all were able to write all the definitions. Okay, we're going to discuss the answers one by one. So first is nutrition. Nutrition is the intake of nutrients essential for proper growth development and various life process of an organism. तो एक एक्शन है, न्यूट्रिशन एक एक्शन है. किस कौन सा एक्शन है? टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेने को न्यूट्रिशन बोलेंगे. ओके, और वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है न्यूट्रिएंट्स? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो वेरियस लाइफ प्रोसेस. ऑर्गेनिज्म की जो जो अलग अलग लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ऐसे सारे जो कुछ भी लाइफ प्रोसेस होंगे उसके लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, सो अगर न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है फिर? So what are nutrients? Nutrients are substances which provide energy required for survival and growth of an organism. So nutrients ऐसी कोई चीज है जो हमें एनर्जी देने वाली है, जो हमको सर्वाइव करने में हेल्प करने वाली है और ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करने वाली है. ओके, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. ओके, सो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स. और कैसे फॉर्म होते हैं? प्रोटीन्स आर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी एमिनो एसिड्स. ओके, बहुत सारे एमिनो एसिड्स को तुम ज्वाइन कर लोगे, सो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा. वो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, विल कॉल देम प्रोटीन्स. नेक्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन. सो इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. जो कुछ भी हम लोग खा रहे हो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे एनर्जी मिलेगी. ओके, सो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी, क्योंकि रेस्पिरेशन है, राइट? रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होने वाले इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो तुम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन आता है. यू ऑल्सो नो द डेफिनेशन ऑफ anaerobic respiration. Anaerobic respiration का क्या होगा? उल्टा होगा. It is also production of cellular energy, but not in the presence of oxygen, but in absence of oxygen. Absent यानी ऑक्सीजन के बिना. Okay, so in the absence of oxygen कर दोगे तो ये anaerobic respiration का definition बन जाएगा. And last is glycolysis. Okay, so glycolysis is the process of oxidation of a glucose molecule in stepwise manner. ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है स्टेप वाइज मैनर में, और उसके एंड में क्या क्या मिलेगा? टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, NADH ट्वाइस एंड वाटर. ये चार चीजों के दो दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. किसके? पायरुविक एसिड के, एटीपी के, NADH ट्वाइस के एंड वाटर के. इन सारे चीजों के मॉलिक्यूल्स दो दो बन जाएंगे एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो दैट्स योर डेफिनेशन फॉर ग्लाइकोलिसिस. ओके, we're going to move ahead. Next question is a give reason. Oxygen is necessary for complete oxidation of glucose. Okay, अगर पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करना है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा ऑक्सीडाइज होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, राइट? सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की क्या जरूरत होती है? ये सवाल है, इसका रीजंस देना है. सो द सिंपल आंसर इज, जो कुछ भी रिएक्शन से ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज पूरी तरीके से, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है. ओके, सो ये आंसर एक लाइन का है, बट यू ऑल कैन नॉट जस्ट राइट वन लाइन, राइट? तुम लोग को ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा होगा, यू विल हैव टू राइट 4 पॉइंट्स. सो लेट्स सी हाउ वी कैन अरेंज दिस one simple answer in 4 points. Okay, so the first point is, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration. और aerobic respiration का मतलब भी दे दिया ब्रैकेट्स में, in IE यानी that is in the presence of oxygen. Okay, so aerobic respiration में क्या होता है? aerobic respiration में glucose completely oxidized होता है. That's my first point. You can call it as an introduction to my answer. Next, it forms CO2, H2O and energy. और कितना एनर्जी? वो भी ब्रैकेट में दे दिया, 38 ATP बनता है. ओके, वाया यानी किस तरीके से? सो वाया 3 स्टेप्स नेमली, और वो 3 स्टेप्स के नाम लिख दिए, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. इन 3 स्टेप्स में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर एंड एनर्जी. कितना एनर्जी? 38 ATP. दैट्स माय सेकंड पॉइंट. अभी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया, तो मैं अभी थर्ड पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में लिखूंगा. ओके, हाउएवर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगेन उसका मीनिंग दे दिया ब्रैकेट में, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, यानी पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता एनारोबिक में. ओके, वाया कितने सारे स्टेप्स है? सो वाया मतलब कौन से स्टेप्स है? ग्लाइकोलिसिस, इट्स द सेम एज
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन की जगह पे फर्मेंटेशन ये स्टेप आ जाता है। ओके, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल्स। इससे क्या होता है, या तो ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे या तो अल्कोहल्स बनेंगे, एंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम मिलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा मिलती है। ओके, और इन सब रीजंस की वजह से हेंस ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू कंप्लीट फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इन सारे रीजंस की वजह से ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट फॉर अस टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। ओके, that's my conclusion. So that's my answer to this give reason. Okay, so we'll move ahead. Again, a different give reason question. Cell division is one of the important properties of cells and organisms. Cell division इतना important क्यों है cells और organisms के लिए, इसके reasons बताने। Okay, इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं। So the answer is point number 1, सेल डिवीजन के बारे में बता दिया फर्स्ट पॉइंट में। ओके, सो दैट्स अगेन माय फर्स्ट पॉइंट कैन आइदर बी एन assumption, a claim, an introduction or a definition, right? So मैंने सेल डिवीजन का definition दे दिया है। ओके, सेल डिवीजन इज द प्रॉपर्टी where a new organism in bracket unicellular, unicellular का मतलब क्या, यूनी मतलब वन, सेलुलर यानी एक सेल वाला। ओके, सो यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। So cell division is a property where a new organism is formed from an existing one. तो already एक organism था, उसमें से एक नया organism बन रहा है। Okay, that is known as cell division. In multicellular organisms, तो अभी unicellular मतलब एक सेल वाला organism, तो multicellular का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा multiple cells वाले organisms. Okay, so in multicellular organisms the growth of organisms is dependent on cell division. So अगर बहुत सारे सेल वाला कोई organism होगा, for example humans have many cells inside them, if we want to grow then cell division पे हम लोग dependent होते हैं। Okay, our bodies grow using cell division. Next, it is also essential for restoration of emaciated body. तो emaciated का क्या मतलब है, so emaciated का मतलब है बॉडी पतली हो जाना, और जो जनरली क्यों होता है, इट कैन आइदर बी बिकॉज ऑफ वीकनेस, या फिर बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है इसके वजह से, और बिकॉज ऑफ एन इलनेस। अगर फॉर एग्जाम्पल यू गेट डेंगू और यू गेट मलेरिया और यू गेट एनी अदर deadly disease, then your body is going to feel weak and your body is going to shrink, बहुत पतली हो जाएगी, that is called as emaciated body. Okay, so it is essential for restoration of emaciated body. तो अगर समझो कोई बीमार हो जाता है and their body size reduces, वो पतले हो जाते हैं, so after they are cured, after they are healed, उनका बॉडी वापस नॉर्मल साइज में आ जाता है। सो जो रिस्टोर हो रहा है, रिस्टोर होना यानी पहले जैसे था वैसे वापस हो जाना। ओके, सो अगर रिस्टोर करना है इमिसिएटेड बॉडी को, अगेन सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट पॉइंट, सेल डिवीजन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड यानी जख्म, हीलिंग यानी ठीक होना। सो अगर जख्म ठीक करनी है, सो सेल डिवीजन विल बी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, एंड अदर सच इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस है जो जिसके लिए सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हेंस आई हैव रिटन द क्वेश्चन अगेन, हेंस लिख के मैंने क्वेश्चन को वापस लिख दिया एज कंक्लूजन। हेंस सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दैट्स योर आंसर टू दैट गिव रीजन। लेट्स मूव अहेड, give again give scientific answer, give scientific reason. Sometimes higher plants and animals too perform anaerobic respiration. अभी higher plants and animals मतलब क्या, so higher plants and animals का एक मतलब हो सकता है कि multicellular, okay, बहुत सारे cells वाले, उसको higher plants and animals बोल सकते हैं कि वो लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, right? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर एक सेल वाला कोई ऑर्गेनिज्म होगा वो बहुत सिंपल होगा, बट अगर बहुत सारे सेल्स वाला कोई ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स, ह्यूमंस, बिग बिग प्लांट्स, सो वो हायर हो गए। हायर क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है इट्स लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, और द अदर वे टू लुक एट इट वुड बी वो ग्राउंड के ऊपर है, सो ग्राउंड के ऊपर होंगे तो हाई है, एंड बिकॉज दे आर हायर, बिकॉज दे आर हाई ऑन ग्राउंड, दैट्स व्हाई दे कैन गेट ऑक्सीजन, राइट? उनके आजू बाजू एयर है, सो उनको ऑक्सीजन मिलेगा, बट फिर भी ये लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। एनारोबिक मतलब क्या, विदाउट ऑक्सीजन। सो आजू बाजू अगर ऑक्सीजन है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हो? ओके, फिर भी वो लोग करेंगे कभी कभी, तो उसका रीजन देना। ओके, सो लेट अस सी द आंसर। रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। यील्डिंग मतलब आउटपुट देने वाला। ओके, सो उसमें से एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन की वजह से। सो रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस
एंड टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स. रेस्पिरेशन कैसे होता है? फूड स्टफ्स को ऑक्सीडाइज करके. दिस वी हैव सीन इन द डेफिनेशन टुडे इटसेल्फ. ओके. Higher plants and animals require oxygen in order to respire aerobically. So generally वो लोग कैसे respiration करेंगे? ऑक्सीजन यूज करके. और जब भी ऑक्सीजन यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं, इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके. सो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जनरली ऑक्सीजन की उनको जरूरत होती है एरोबिकली रेस्पिरेशन करने के लिए. हाउएवर इन कंडीशंस वेयर ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड यानी खत्म हो गया, तो कभी कभी ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है. ओके. So in conditions where oxygen is depleted, these organisms perform anaerobic respiration to obtain energy. अभी आजू बाजू ऑक्सीजन है ही नहीं, बट लाइफ प्रोसेस तो चलते रहने वाले हैं, राइट? और उस लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए. सो यू कांट से कि अरे ऑक्सीजन नहीं आजू बाजू तो हम लोग रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं बनाएंगे. सो फिर भी तुम लोग को एनर्जी तो बनाना पड़ेगा, इसलिए वो लोग मजबूरी के लिए दे विल डू anaerobic respiration. Okay. Glucose is incompletely oxidized and a comparatively lesser amount of energy is obtained through anaerobic respiration. So anaerobic respiration में ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, थोड़ी कम एनर्जी मिलेगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. बट बिकॉज ऑक्सीजन है ही नहीं, दैट्स व्हाई दे विल हैव टू डू anaerobic respiration. Okay. Therefore, sometimes higher plants and animals to perform anaerobic respiration. तो again therefore लिख दिया और क्वेश्चन वापस वैसे के वैसे कॉपी कर दिया as my conclusion. Okay, let's move ahead. Question number 5. Okay, answer in detail. Explain the glycolysis in detail. Again ये मैंने एक बार पहले भी practice question दिया था, so if you all have already written that time glycolysis का answer, you need not write this again. Okay, A part. बट अगर पिछले लर्निंग सेशन में जब मैंने बोला था प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह लिखो, तुम लोग ने तभी नहीं लिखा था. नाउ इज द टाइम टू राइट इट. ओके. एंड द सेकंड क्वेश्चन आल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स एक्सप्लेन द माइटोसिस इन डिटेल. सो माइटोसिस हम लोग ने काफी डिटेल में समझा है. वी आल्सो हैव ड्रॉन डायग्राम्स फॉर माइटोसिस. सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स अगेन एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप में क्या होता है. ओके. एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, गो टू योर टेक्स्ट बुक. ओके. सो टेक्स्ट बुक में जाओ, टेक्स्ट बुक में ग्लाइकोलिसिस ढूंढो और वहां से आंसर लिखने की कोशिश करो. Similarly for mitosis, and I tell you all again, it is very important for us to read textbooks. It is very important for us to by heart these answers. Okay, ये सब जो बड़े बड़े questions दिए हैं जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए, especially they are very important for us to by heart. Very important for us to score good marks in exams. Okay, so start by hearting these answers. Okay, great. So next, let's move ahead. Next question is answer in detail how all the life processes contribute to growth and development of body. So हमारे बॉडी में जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस है वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके. अगेन दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. It's related to a lot of things which you have already learned in the previous classes. So I'm going to ask you all to try and write this answer by yourself. Okay, so I'll wait for 5 seconds, pause the video here and try to write the answer by yourself. At least 3 to 4 points you should be able to come by yourself. Okay. So I'm going to wait for 5 seconds. Okay, I hope at least you all were able to write 2 points how various life processes contribute to our growth and development. Okay, so let us see the answer. First point, various life processes like nutrition, digestion, respiration. Okay, let me read that again. Various life processes like nutrition, digestion, respiration, excretion, circulation and control and coordination are essential for growth and development of body. तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया? इंट्रोडक्शन दिया. इंट्रोडक्शन कैसे दिया? क्या क्या अलग अलग लाइफ प्रोसेस होते हैं उसके एग्जांपल्स दे दिए. ओके. सो ये सारे एग्जांपल्स है हमारे लाइफ प्रोसेसेस के और बोल दिए कि ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. Next point, now we'll try to explain each and everything one by one. Okay. Essential nutrients like carbohydrates, proteins, fats, etc. are obtained through digestion of food. Okay. So digestion का क्या importance है? Digestion में हम लोग को carbohydrates, proteins और fats जैसे important nutrients मिल जाते हैं. Okay. So that's the importance of digestion. And are transported to various cells of body through blood circulation. तो जो खाना हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उस खाने के अंदर, वो पूरे बॉडी के सेल तक फैलना चाहिए, राइट? वो कैसे हो रहा है? दैट इज बीइंग डन बाय ब्लड सर्कुलेशन. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ आवर प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. ओके. सो दो लाइफ प्रोसेस को हम लोग ने सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट, ऑक्सीजन ऑल्सो एंटर्स द ब्लड एंड इज ट्रांसफर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी where it is utilized for cellular respiration. So ऑक्सीजन जो हमारे
ब्लड में एंटर करता है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और वहां पे जाके क्या होने वाला है उस ऑक्सीजन का, इट विल बी यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज मतलब यूज होने वाला है वो, ओके, तो इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको यूज करके हम लोग ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीजन को यूज करके फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाने वाले, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके। नेक्स्ट, fourth point, harmful metabolic waste generated is eliminated from the body by the process of excretion. So excretion से क्या होने वाला है, हमारे बॉडी में जो कुछ भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स है वो एलिमिनेट होने वाला है, एलिमिनेट यानी हमारे बॉडी से बाहर जाने वाला है, ओके। So that is the importance of the life process excretion. Last point, all these various life processes are controlled and coordinated by nervous system and endocrine system, okay, they're controlled and coordinated by nervous system. Nervous ये word का मतलब क्या है, nervous यानी related to a brain and spinal cord, okay, and endocrine system, what is endocrine system, it is the system which produces hormones. Hormones क्या है, वो ऐसे chemicals जो हमारे body के processes को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन इज अ हार्मोन एंड इंसुलिन कंट्रोल्स द ब्लड लेवल्स इन आवर सॉरी शुगर लेवल्स इन आवर ब्लड, सो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये जो कुछ भी लाइफ प्रोसेस है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करने वाला है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सो दैट इज these are the importance these are the importances of various life processes for our growth and development, okay. This question will most probably be asked for 3 marks. Okay, next, again I'm giving you all a practice question. How is energy formed from oxidation of carbohydrates, fats and proteins? Again, this we have I think discussed in the learning session where we were seeing aerobic respiration, और उसके बाद वाला दोनों में से कोई तो एक learning session में we have discussed this in detail, okay. And if you cannot find good notes in your notebooks, ओपन या टेक्स्ट बुक्स एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी कैसे मिलती है, ओके। सो आई एम ट्रस्टिंग यू ऑल टू राइट द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड सेकंड पार्ट आल्सो। अगेन ये हम लोग ने फ्लो चार्ट डिस्कस किया है, यू ऑल माइट हैव आल्सो ड्रॉन इट इन योर notebooks, okay. So just see this diagram and try to correct this. I would say don't just open the textbook or your notes and see the diagram and correct it. उसको पहले by heart करो तुम्हारे टेबल को, और फिर बाद में यहाँ पे आके इसको करेक्ट करने की कोशिश करो, ओके। सो आई शुड आल्सो सी दिस इन योर नोटबुक्स, द करेक्ट फ्लो चार्ट फॉर दिस एंड द आंसर टू द क्वेश्चन हियर, okay. We'll move ahead. So that's it mostly, that's it for this learning session. But before actually ending this learning session or ending this chapter, I found this very fascinating picture and diagram of mitosis, okay. So यहाँ पे ऊपर जो 5 चीजें हैं, ये 5 स्टेजेस है। सो 5 स्टेजेस क्या माइटोसिस के, I prefer Malayalam and Tamil, right? So IPMAT. So ये I for interphase है, P for prophase है, M for metaphase है, A for anaphase है, T for telophase है। तो इसी को वो लोग ने माइक्रोस्कोप में एक ऑनियन रूट टिप, सो ऑनियन के जो रूट्स होते हैं उसको थोड़ा सा कट किया, उसमें आयोडीन डाला, आयोडीन इज पर्पल कलर का। आयोडीन क्यों डाला, ताकि वो पर्पल कलर का दिखे हम लोग को, ओके, जो कुछ भी माइक्रोस्कोप में हो रहा है। सो उसमें थोड़ा आयोडीन डाल दिया और फिर उसको प्रेस करके माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो यू कैन क्लियरली सी इन द माइक्रोस्कोप की फोटोज अलग अलग स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ओके। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, इंटरफेस, जहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से दिखता है, तो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग, राइट। नेक्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और ये क्रॉस शेप्ड क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं, तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहे हैं क्रॉस शेप्ड क्रोमोसोम्स, और वो कंडेंस हो रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ठीक से दिख नहीं रहा अभी। नेक्स्ट, सो ये था प्रोफेज। पी फॉर प्री यानी सबसे पहला, ओके। देन है एम फॉर मिडल, राइट, मेटाफेज। एम फॉर मिडल यानी सारे क्रोमोसोम्स मिडल में आने चाहिए। सो अगेन यू सी ऑल द क्रोमोसोम्स हैव कम इन द मिडल, ओके। और स्पिंडल फाइबर्स भी आने वाले इस फेज में। नेक्स्ट इज एनाफेज। ए फॉर अवे। अवे क्या होने वाला है, अवे the chromatids are going to be pulled away by the spindle fibers. So यहाँ पे if you can see clearly the chromatids
being pulled away from the by the spindle fibers. और फिर lastly telophase यानी T for two. So you will start seeing two different nucleus. So यहाँ पे you see one nucleus here, one nucleus here. और क्योंकि ये plant cell है, plant cell में बीच में एक cell wall create होते हुए दिख रहा है, राइट. साइटोकिनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे. सो यहाँ पे यू कैन सी द सेल वॉल बीइंग प्रोड्यूस्ड. ओके, सो यू कैन क्लियरली सी, ये जो डायग्राम्स हम लोग ने देखा था वो क्लियरली हम लोग को माइक्रोस्कोप की फोटो में भी दिख रहा है. ओके, सो आई फाउंड दिस फोटो वेरी फैसिनेटिंग इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी दिस हैपनिंग इन ऑनियन का रूट टिप. ओके, सो द वर्ड्स वी लर्नड टुडे वर, फर्स्ट वाज यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर यानी बस एक ही सेल होता है. तो मल्टीसेलुलर क्या होगा, एक से ज्यादा सेल. रिस्टोर यानी ब्रिंग बैक टू प्रीवियस कंडीशन, पहले जैसा था वैसे के वैसे लेके आना. इमेसिएटेड यानी वेरी थिन, बहुत पतला हो जाना. फ्रॉम लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, या फिर इलनेस, कोई बीमारी हो गई है. एंड यील्ड मतलब आउटपुट. ओके, so that's it for this learning session, and that's it for this chapter. Next we're going to see chapter number 3, and I hope you all have understood this chapter. And if not, there are many big words, big molecule के नाम दिए इस chapter में. You'll have to read it again and again. Okay, बड़े words हम पहली बार लिखते तो बहुत डर लगता है, यार ये तो बहुत ही difficult है, मुझे कुछ नहीं समझने वाला है और मुझे याद भी नहीं होने वाला है. But 4-5 times if you revise again and again, it starts becoming easier. Okay, so revise this again and again and start by hearting the answers. If you want to score well in board exams, you have to by heart answers. Okay, बस समझ के तुम लोग को board exams clear नहीं होने वाला. Okay, that's it for today, and I'll see you all in the next learning session. Bye. Peace.